Hi cuties, welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to talk about my 3 months experience. Yes, I completed 3 months in aviation. Thank you. Thank you to myself. But I wanted to make 1 month experience, but I couldn't for obvious reasons. But if anyone doesn't know what is obvious, I was very tired and I didn't have any time, and I was overwhelmed with everything I was processing. So I didn't had the opportunity to make a video. So yeah, I'm making a 3 month experience. So 3 months complete karte karte, I think I have got somewhat clarity in what I am doing at work finally. स्टार्टिंग में आप नए आते हो, यू आर द R1, द लीस्ट एक्सपीरियंस क्रू, एंड यू आर पेयर्ड अप विद द लीड, मतलब आप फॉरवर्ड में काम करते हो. सो देयर वर मैनी इंस्टेंसेस कि जब यू वांट टू फिगर आउट कि अच्छा इनके साथ कैसे काम करना है, बिकॉज एज अ क्रू एवरी डे इज़ वर्किंग विद समवन न्यू. आपका पूरा सेट ऑफ क्रू न्यू होता है. At a little smaller base like Ahmedabad, still you meet people you have with whom you have flown, but I think बड़े bases पे तो heard from person who heard from someone else कि उनके 10 year experience में कभी crew repeat नहीं हुआ. Now this happened on bigger bases, but in a quite smaller, like comparatively smaller base like Ahmedabad, I still find people whom I have flown with, and sometimes I even get the opportunity to fly with them again, which is very nice because sometimes you find very amazing people in aviation. Most of them are very nice. सब लोग बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज हम लोग वी नो कि वी वोंट बी वर्किंग विद देम अगेन. मतलब फिक्स तो नहीं पता होता करेंगे नहीं करेंगे. सो एवरी वन ट्राइज टू बी क्वाइट नाइस विद एवरी वन, बिकॉज आप अगर अच्छे हो तो आपको भी अच्छा ही मिलता है. एंड इट इज़ क्वाइट वॉट यू गिव इज़ वॉट यू रिसीव. सो आप जितने अच्छे रहोगे, आप जितने हेल्पफुल रहोगे, आप जितने काइंड रहोगे, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे. एंड आई बिलीव I believe very on that. I am not getting the word, but I believe very truly on that. Starting में as a R1 you have a sales, ठीक है. So it got quite panicky in me कि आई हैव टू रिटर्न द चेंज, आई हैव टू पंच भी करना है सेल, मुझे चेंज भी रिटर्न करना है, कितना सेल हुआ है उसका मुझे पूरा कैलकुलेट करना है, मेरे कार्ड के साथ टैली करना है. लाइक देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू, एंड यू गेट बेटर एट इट एक्सपीरियंस के साथ. लाइक जैसे जैसे यू आर डूइंग इट कंटिन्यूसली डे बाई डे हर दिन, वैसे वैसे यू गेट थोड़ा काम एंड थोड़ा यू फिगर इट आउट कि ठीक है, नाउ आई नो माई वर्क. So 3 months में I can say I have met different type of people. I have different type of experiences, a lot of experiences, different type of crew, different type of leads. सबका अपना अपना होता है, and किसी का expectation आपसे बहुत ज़्यादा है. Some are very helpful, some are very calm, some are very cool and entertaining, some are quite strict in what are the SOPs, standard operation procedures, and you cannot deviate them. Of course, you should never deviate them, but some people are very 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 strict about them कि मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए. So ऐसा होता है ना कि आप जिनके साथ काम कर रहे हो आप उस हिसाब से यू चेंज. सो वो थोड़ा मोल्ड होने में आपको टाइम लग जाएगा. You start observing a lot of things. Like I was already a very good observer, but working I have also started getting a lot better in that, because you see कि वो किस type का इंसान है, and then you act accordingly, and ये तो करना ही पड़ेगा. So if I talk about passenger experiences, पैसेंजर तो हज़ारों तरह के देख लिए. लाइक देर आर समवेयर वेरी नाइस पीपल एंड देर आर समवेयर वेरी एटीट्यूड वाले लोग.
जो अपना एक एटीट्यूड लेके घूमते हैं कि मैंने मेरा सीट बुक किया है तो मुझे तो मतलब सब साथ में ही आ रहा है, सारे सर्विसेज फ्री आ रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना है. वी डू अ सेक्टर which is Bangalore Chennai. It is a 35 minutes flight, and mostly there are corporate passengers जिनका प्री बुक होता है. And you know 35 minutes flight feels like. आप टेक ऑफ किए, मोस्टली आई थिंक 5 to 8 minutes होगा, एंड देन प्रिपेयर फॉर अराइवल आ जाता है, प्रिपेयर फॉर लैंडिंग. And in that 5 to 8 minutes you have to do everything, serve them, and उसके साथ कितना मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग मैं कितना बताऊँ कि आपको समझ आए, बिकॉज एनीवेज इफ़ यू आर गोइंग फॉर द ट्रेनिंग you'll get to know what I'm talking about. But what happens with these corporate passengers is that they carry an attitude with them कि मेरा तो they want their luggage to be on top of their seat when every single person on the aircraft is having a carry-on with a laptop bag or another bag. Just think about it. वो एक लिमिटेड स्पेस है एयरक्राफ्ट में, ठीक है, ओवरहेड बिन्स. अगर हर एक इंसान, इमेजिन 180 सीट्स में हर एक इंसान एक लगेज और एक हैंड बैग के साथ आ जाएगा, एंड दे डोंट इवन वांट टू कीप इट अंडर द सीट लाइक द स्मॉल लगेज, एंड दे वांट इट all on the top of their seat. Just imagine how you'll deal with them. I got traumatized. Like at a time I was very traumatized with boarding कि बस baggage issue ना हो. But आजकल baggage issue is trending. I think हर एक sector में there is baggage issue, and you have to be vigilant. You have to be in the cabin. You have to advise the passengers, please सीट के नीचे रख लो अपना छोटा बैग. एंड what happens कि एक सब लोग अपना ऊपर रख दिया ना, और क्या होगा कि मोस्टली what happens कि कोई किसी और सीट के ऊपर रख के चला गया. नाउ वो सीट पे जो पैसेंजर आएगा तो वो अपना कहाँ पे रखेगा. अब if I'm making space and I want one bag to be kept under the seat, the passenger is like, why should I keep it under my seat? Everyone else have their luggage upar. So this type of attitude is what I'm talking about, कि you have to handle, and it gets quite exhausting handling these things. उसके साथ I think time management is what I've got better at. Time management के साथ like if it's a short sector, it's more than 60 minutes, you have to do same everything जो आप भले 2 घंटे की फ्लाइट में करोगे, बट वही आपको सारी चीज़ करनी है, बट यू हैव टू डू इट क्विकली. सो आई थिंक आई हैव गॉट बेटर इन दैट. छोटी छोटी चीज़ें कि व्हाट हैपन स्टार्टिंग में आई हैड अ लिस्ट कि हर लीड ना लाइक एवरीवन गिव्स यू अ फीडबैक. सो इट्स लाइक ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर में जो मुझे वो फीडबैक दिया ना, आई विल फॉलो दैट, बट इफ़ आई फॉलो दैट आई फॉरगेट समथिंग एल्स. सो उसका मुझे रिमाइंडर आ जाएगा, समझे ओके ये भी करना है. फिर दूसरे सेक्टर में अगर कोई नई लीड आ रही है, सो वो कुछ बोलेगी तो वो भी करना है, तो वो भी करना है. सो आई हैड अ वेरी बिग लिस्ट कि ठीक है ये करना है, एंड आई जस्ट केप्ट एडिंग ऑन दीज मतलब इमेजिनरी लिस्ट, एंड आई जस्ट केप्ट एडिंग दोज feedbacks to that list. And I think it helped me, taking all the feedbacks positively, because anyways you want to get better at what you are doing, right? You want to have that feedback ki no, you are very you are doing everything very well, and you are very proactive. Like I remember in my fam flight I got the feedback that you are very proactive, you know what to do, you are proactive in the cabin, you are handling call bills, so keep up the good work, and you are you are perfect as a cabin crew. So that motivated me. If you get leads like this na, so it's like अंदर से दिल खुश हो जाता है. And recently I also got the opportunity to become L2, which is like second in command. So अगर आप you are at the
बिगर बेसिस. सो वहाँ पे नए नए लोग आते रहते हैं. सो इफ़ ऑन द फ्लाइट देर आर, if on a 320 like the 4 crew wala flight, if there are 2 crew which are younger than your IGA, like your, I'm using all the terms कैसे पता चल, like what happens कि आपको एक नंबर मिलता है, ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से. अगर आपसे 2 लीस्ट एक्सपीरियंस लोग आ गए ना, सो यू बिकम सेकेंड इन कमांड. आप पीछे आफ्ट में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, ओवरविंग पे ब्रीफिंग देने का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, एंड चेक्स पास करने का, पीछे का सब मतलब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, देन लाइक इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला थिंग being second in command. So I got pulled out from standby ki now you are as operating as L2, like oh my god, first time being L2 and वो भी मैं pull out हो गई सुबह. I was on standby and like oh my god, देखते हैं क्या होता है. सब अच्छे से हो गया. I got the feedback from the lead that it didn't felt that you are doing it for the first time. Everything was very well done, very well, and good work. So like thank you so much. That's the biggest compliment I could have ever got today. So that more like that cheered me up. We were doing 3 sectors. So okay, sectors से याद आया, how you handle exhaustion. स्टार्टिंग में तो व्हेन यू आर फ्लाइंग ना, तुम्हें पता नहीं चलता है कि तुम कितने ज़्यादा थक रहे हो. वो तो आई एम एट होम, सो आई हैव माई फैमिली मेम्बर्स टू टेक केयर ऑफ मी व्हेन एवर आई एम डन. लाइक आई जस्ट ईट, स्लीप, go for flight and come back home and repeat. But people who are there outside the city, outside your hometowns, and working in some other city, it will get pretty tough because you have to make food, you have to clean, you have to take care of yourself at the same time, and you have to come to an empty house if you don't have roommates. So that can all get pretty overwhelming starting mein. You get used to it. I won't say this is what life is all about. I'll say this is what adulting is, the reality of adulting. But I remember ऐसा कि I come from the flight and I'm so tired, I'm so hungry that I'm just there in the uniform lying at bed and my sister is feeding me because I don't even have the energy to eat. उठ के खाने का भी एनर्जी नहीं है. I just want to remove makeup, change my clothes and just sleep. But इतना ज़्यादा tiring हो जाता था. And recently I did now what we have 2-day patterns or 3-day patterns. So 2-day pattern is you go for a layover, 1-day layover, you come back the another day, so it's 2-day. 3-day pattern, you do 2 layovers. So you go, you operate, you have a layover, then you operate, you have layover again, and then the 3rd day you are coming back. So these are the 2-day and 3-day patterns. So isme na what happened last month end May, I had a 2-day pattern and 3-day pattern back to back, 5 days of continuous flying, and I literally could feel the fatigue everyone talks about. जो fatigue body में हो जाता है ना कि you are working and you don't have the energy body में काम करने का. You just want to, मतलब वो अंदर से ना खोखला वाला feeling ना, which is not nice. You have to take care of yourself. अब मुझे तो बस 3 महीने में my mom is like, अभी तो भाई करोगी ना, 10-15 साल तो करोगी obviously. So you have to take care of yourself. मैं खुद को भी बोलती रहती हूँ because you are coming on layovers, you are eating बाहर का खाना. Did you hear? यहाँ पे पास में ही आई थिंक एयरपोर्ट, इसलिए. सो वो तो आई एम लकी that I am home based, so my mom packs food for me. ऐसे बहुत सारे लोग जो बाहर से भी रह रहे वो भी अपना घर का खाना बना के आते हैं, but I think it's a privilege staying at home and then working. I'm thinking what else should I talk about? What happens कि अगर
even if you are doing 3 sector, even if you are doing 1 sector, but 1 sector हो गया मतलब coming from one place to another, like Ahmedabad to Bombay is 1 sector, then Bombay to Hyderabad is another sector, and Hyderabad to Ahmedabad is 3rd sector. So we call sectors. So even if you are doing just 1 sector but you have demanding passengers, it is, you know, equivalent to 3 sectors, because you get so tired. I remember we did a 3 sector and all 3 sectors were more than 1 hour 30 minutes. Just imagine, more than 1 hour 30 minutes. We had enough time, but we were just serving the whole time. Like the moment we got completed with it, हम लोग पीछे आए, we sat down and we got prepared for arrival. So like no खाने का time, no बैठने का time, you're just working. So there are some days like this when you're questioning but I think I like what I do. I know I like what I do. कभी कभी अंदर से आ जाता है, you know, when some passenger just smile at you and say thank you for your service. वो एक इंसान, भले वो 180 में से कोई भी स्माइल नहीं करके गया, एक इंसान वो बोल के जाता है ना, लाइक यू आर डन, यू आर सेटिस्फाइड कि ठीक है. सो दिस हैज़ बीन माई 3 months एक्सपीरियंस. मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा अभी. I feel very lucky that I've got mostly सब अच्छे लोग ही. Hopefully I don't attract these type of people, like the people I don't want to meet, but Ahmedabad as a base is very nice. We got very nice people, everyone is very nice to each other. So yeah, grateful. Chalo, bye bye, that was all. If you have any question, do comment in the comment section, and do like and subscribe for more videos. Bye bye.